So, hello everyone, I'm Sudipta, welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. So, wishing you all a happy Nuakhai. So guys, Nuakhai Juhar and Kali to Pavitra Ganesh Puja gala. Hope samaste bhalo se celebrate करिथिबो. What's it? कौन खबर टिके कुआ? How are you all? And आगुआ कही दउछि आपण मानकर चंदन सर एक्चुअली पूजा पई घर को जाइथिले सो सांकर आसीबारे लेट हबो सेथिलाई आज गोटे दिन पई सांकर टाइम टा आपण मानकर क्लास नउछि बाकी काली टू एज यूजुअल चंदन सांकर क्लास हैला गुड मॉर्निंग विश्वजीत गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग श्रावणी जानी पाछु तुम सब सैम को बहुत मिस करूथबो बट ओनली फॉर टुडे सर जेहेतु प्रेजेंट नाहंती सांकर टाइम रे मो क्लास में जाउछि ठीक अछि होप तुम माने माइंड करिवनी सो अगेन आपण माननकु मु कहिथिली हमर कोन प्राइस ड्रॉप हे जाईची ऑफर महापैक रे आपण मानकर प्राइस ड्रॉप हे जाईची सो आपण माने देखि पारुथबे गणेश पूजा नुवा खाई ऑफर आसी जाईथिला जोटा कि आपण माने हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन करिछि किछि भी क्वेरीज रिगार्डिंग परचेजिंग द महापैक आपण माने 2499 अछि द प्राइस ता वैलिडिटी अछि 1.5 ईयर किछि भी प्रॉब्लम असले नंबर को कांटेक्ट करी के आपण माने कनेक्ट हेकी बैच विषय सब जान परिबे हैला एंड जेमिति के आपण मानु कहूची 3 दिन थिला 26 27 एंड टुडे इज द लास्ट डे जो माने भी नेबा को चाहउचंती या को लिस्ट प्राइस केते बेले आसेनी दिस इज द लिस्ट प्राइस जोटा कि आपण को ऑफर दिया जाउची सो ग्रैब द ऑफर डोंट वेट ओके तो स्टार्ट करिबा ईवीएस रे किछि क्वेश्चन एंड आंसर रिगार्डिंग योर इकोलॉजी एंड बेसिक ऑफ ईवीएस इजी क्वेश्चंस आनिची डिफिकल्ट नाही डोंट वेट ओके तो स्टार्ट करिबा जय जगन्नाथ एवरीवन So see, कौन अच्छी question? Now ma'am, which branch of biology deals with the interaction between organisms and their environment? So organisms and से जो organisms जो environment भीतर कौन survive करंती से जो organisms जो environment भीतर sustain करंती तो तांको दिजनका भीतर जो relation टाको हमें कौन कहूचे? That is botany, ecology, zoology or geology. Obviously botany तो हबनी botany is what? That is the study of plants. Plants मानकर study को हमें botany कहूचे but एठी कहता जाछि ना organisms and जो माने organisms माने जो environment रे रुहंती ता सहित तांका relation को हमें कौन कहूचे obviously कौन कहबा ना ecology कहबा zoology ता आसीगला animals study of animals हमें कौन कहबा ना zoology right geology study of earth then हमें कहबा कोन ना geology so रहिला कोटा ना ecology is the right answer कोथि पई ना this is the branch of ecology is also the branch of biology like the botany and zoology but this is different because this is the branch of biology that studies the relationship between the organisms and their environment जेमिति कि living plus non living organisms and सेमाने जो environment भितरे रुहंती तांकर relationship को हमें कोन कहूचे ना मैम ecology कहूचे एग्जांपल अपन माने food chain in a pond ecosystem को नै परिबे एग्जांपल food chain in a pond ecosystem याको नहीं परिबे क्लियर नेक्स्ट इबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आछ देखो ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी जेमिति कि आपण मानको इकोलॉजी विषय रे कहिली देन मते कुह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी हमें कहा को कहूचे ऑप्शन कोन अछि ना मैम बायोस्फीयर ना इकोसिस्टम ना कम्युनिटी ना इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कहा को हमें कहबा गुड मॉर्निंग एवरीवन ठीक जल्दी जल्दी कनेक्ट हो क्लास करिया ओके न्यू स्टूडेंट रा मु देखिले हमको बहुत सारा देखलिनी क्लास रे सो मते को व्हाट विल बी द राइट आंसर ना मैम लार्जेस्ट यूनिट जदी पचारि थांता जदी एठी हमकु कोन ना मैम लार्जेस्ट यूनिट पचारि थांता ना ताहाले हमें कहा को कहिबा ना बायोस्फीयर को कहिबा कोथि पई दैट इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ रे हमर जेति की इकोसिस्टम अछि इकोसिस्टम कोन कहितली ना मैम इकोलॉजी को नहीं कि इकोसिस्टम को जो स्टडी करे दैट इज द इकोलॉजी सो दैट मींस द ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट ताको हमें कोन कहूचे ना मैम इकोसिस्टम सो इकोसिस्टम को नहीं हमर कोन ना बायोस्फीयर सो दैट इंक्लूड इकोसिस्टम इन द अर्थ एग्जांपल अपन माने परिबे अर्थ लाइफ सपोर्टिंग जोन
जेते सारा लाइफ सपोर्टिंग जोन अछि ताको आपण माने मैथ्स पे नहीं परिबे बट क्वेश्चन इज कोन क्वेश्चन गाइस कोन रहिछि ना हमको स्मॉलेस्ट यूनिट पचारछि स्मॉलेस्ट यूनिट को हमें कोन नहीं परिबा या मैम ऑप्शन डी केमिति हबो इकोसिस्टम हबनी ना इकोसिस्टम हबनी इकोसिस्टम गाइस इकोसिस्टम हेले तो सिस्टम ऑफ लिविंग लाइक बायोटिक आसीगला नॉन बायोटिक भी पड़े आसला लिविंग एंड नॉन लिविंग भी पड़े आसला राइट ताको हमें टिके सेपरेट कर देबा ताको देखो जेते लिविंग एंड नॉन लिविंग कहिला दैट मींस बायोटिक एंड नॉन बायोटिक अपन को कहि देला सॉरी बायोटिक एंड एबायोटिक कहि देला इन दैट केस हमें कोन कहूचे ना कोन इकोसिस्टम को नैथिली सेटा कोन स्मॉल की सेटा तो बहुत बड़ा किंतु जब हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कोन हबो ना हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करिबा इंडिविजुअल पूनम मैम के पुनी सॉरी प्रणम मैम ओके सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को हमें देखिले दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट आपण मन नै परिबे द सिंगल लिविंग सेल गोटे सिंगल लिविंग बीइंग हैला एग्जांपल आपण माने सिंगल ए काउ ए ट्री और ए बैक्टीरियम तो ए मान जदि आपण एग्जांपल लेले दैट इज द इकोसिस्टम रे सबटू स्मॉलेस्ट यूनिट बोली हमें नउचे कम्युनिटी हबनी कम्युनिटी के कोन हबनी काना प्लांट्स हैला एनिमल्स हैला माइक्रोब्स हैला जेतेबेले गोटे फॉरेस्ट से माने रहंती ना गोटे सिंगल फॉरेस्ट रे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स रहउची गोटे सेम स्पीसीज रो गोटे आंबा गछ अछि गोटे सुंदरी आंबा अछि गोटे आम्रपल्ली अछि गोटे बैगण पल्ली अछि एमिति वेराइटी ऑफ आंबा गछ अछि जेतेबेले हम कोन कहछे ना गोटे फॉरेस्ट से गोटे कम्युनिटी कहि दउचे सेम जदी गोटे कम्युनिटी भितरे मींस गोटे फॉरेस्ट रे हम देखुचे टाइगर भी रहउची हमर कोन लेपर्ड भी रहउची इवन एलिफेंट भी रहउची वेराइटीज एनिमल्स रहउछन देन भी हम ताम कहि दउचे कम्युनिटी सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ता कोन हबो ना सबटू स्मॉलेस्ट कम्युनिटी मन रहबो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी कोटा हबो ना इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम बायोस्फीयर कम्युनिटी एमाने सब लार्जर देन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स क्लियर नेक्स्ट जोठी किछि डाउट हबो पचारिबो देन आगु को क्लियर देखि जिवो ओके मन रहबो वेरी गुड सो को देखो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द रेगुलेशन इज कॉल्ड अच्छा पॉपुलेशन रो ग्रोथ होउची एंड तार रेगुलेशन भी होउची नॉर्मली हमें जानि छे सब जगह पर पॉपुलेशन ग्रोथ होउची सेति पय त आज का डेट रे इंडिया चाइना को भी टॉपिक ही हाईएस्ट पॉपुलेटेड माने कंट्री होली हो जाई छी तो मते को द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स रेगुलेशन को हम कोन कहूचे डेमोग्राफी साइकोलॉजी टैक्सोनॉमी और एंथ्रोपोलॉजी कोन हबो राइट आंसर टिके देला कोन लिखि चलने सेटा ओके राइट आंसर कोन हबो ना 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 एंथ्रोपोलॉजी काहे की यस 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 राबणी वेरी गुड दैट इज dermography guys dermography कोन that is the study of human population so human population ऊपर हम जे स्टडी करू छे that is the study of human population that is what that is dermography मन रहबो एतिकी मन रहबो that is the study of human population इवन तार साइज ऊपरे तार ग्रोथ ऊपरे तार डेंसिटी ऊपरे तार डिस्ट्रीब्यूशन ऊपरे एंड तार जतिकी वेराइटीज ऑफ ट्रेंड्स आसुची एग्जांपल आपण माने परिबे जो सेंसस ऑफ इंडिया रहउची हमें कहउची ना 2011 सेंसस अकॉर्डिंग कोटा रे डिस्ट्रिक्ट रे सबटु लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कोटा हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कोटा रे लिटरेसी रेट केते कोटा रे लिटरेसी रेट कम अछि ए सब हम स्टडी करते कोथरे ना डेमोग्राफी रे ओके नारायण anthropology होची study of human with their culture the study of humans their culture and the evolution like आगुरु कोन आपण मान जानिथिले कोन सिम्पाजी जुग को आपण माने पढांतु तो हमर एंसेस्टर्स माने करथिले सिम्पाजी को हम कहउची आगु को आछसंती तो हमें तांकर कल्चर कोन से मानकर लाइक कोन ह्यूमंस रो तांकर कल्चर तांकर इवोल्यूशन धीरे धीरे केमिति आगु को जाईची एग्जांपल आपण नै परिबे स्टडी ऑफ ह्यूमन फॉसिल ताक नै परिबे ना ह्यूमन फॉसिल को जते नेबे तांकर कल्चर तांकर बिहेवियर इवन तांकर इवोल्यूशन को लेके आपण माने एंथ्रोपोलॉजी कहउचंती सो दिस इज एग्जांपल आपण मानकु देइची स्टडी ऑफ ह्यूमन फॉसिल ओके क्लियर गाइस क्लियर यस यस स्टडी ऑफ मैनकाइंड भी आपण माने कहि पारिबे प्रियदर्शिनी चंदन सर गां को जाइथिले सरंगर आसिया पय टिके लेट होची सर रास्ता रे अछन सेति लागि तांको टाइम टा मने लेछि only for today okay so cytology हमें कौन कहउचे cytology को जानि था that is study of ना cells and taxonomy important रहउची taxonomy हमर human being रे like animal case रे and both plant case रे भी रहउची that is the classification of organisms into group classification of organisms into group आपण कहि परिबे द जेमिति होमो सैपियंस अंडर द mammalian group रहिला
अंडर द मामालिया हमर होमो सैपियंस रहला त आउट ऑफ पार्ट तार हमें टैक्सोनॉमी करछु तार डिवीजन करूचे दैट इज व्हाट ना टैक्सोनॉमी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप ओके जेमिति होमो सैपियंस को आपण माने एग्जांपल ले नै परिबे ओके क्लियर वेरी गुड ये कहा अंडर आसीबो ना मैं मामालिया अंडर आसीबो मामालिया ओके वेरी गुड एटा डबल एम करबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की आपण माने को एते ही कहितली इकोलॉजी रो हायरार्की दैट मींस लार्जेस्ट यूनिट हेले कोन कहबो कम्युनिटी नै कम्युनिटी ता तले आसीबो बायोम भी नै बट कहितली बायोस्फीयर जदी आसीबो बायोस्फीयर आसिले आपण माने कहितली कि सबटो लार्जेस्ट आपण माने कहिबे कम्युनिटी कहा को लार्जेस्ट यूनिट कहा को बायोस्फीयर को and smallest unit कौन कहतली ना individual जदी ऑप्शन आसिला that is the smallest unit and largest unit कौन हबो ना मैम biosphere will be the largest unit because this is the global ecological system including all living organisms plus the environment example माने आपण माने अर्थ को नै परिबे clear very good biome हेले कौन कहूची ना this is a large area but smaller than the biosphere so large area with smaller climate plants and animals हम एग्जांपल नै करिबा डेजर्ट एरिया हैला टुंड्रा एरिया हैला ग्रासलैंड हैला तो ए माने गोटे टाइप रो ना बायोम रे जिबे क्लियर बुझी पारुछ कम्युनिटी हैला ऑलरेडी आपण माने कहि देइथिरि को डिफरेंट पॉपुलेशन जेते बेले गोटे जगह रे डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर इन अ सर्टेन एरिया ताको हम कोन कहूचे ना मैम कम्युनिटी कहूचे एग्जांपल आपण नै परिबे प्लांट्स प्लस एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट क्लियर तो बुझा पड़ुची किछि कोठी डाउट हैले ताको क्लियर करिकि गाइस आगु कुछ हैला इकोसिस्टम हेले हमें कोन कहूचे ना दैट इज द स्मॉलर फंक्शनल यूनिट लाइक अ पॉन्ड इकोसिस्टम आपण माने एग्जांपल नै परिबे राइट चल नेक्स्ट मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम अच्छा मते कहिलो बायोम तो एबे ही कहिली ऑप्शन बी रे कोन अछि बायोम तो आपण माने को एबे ही कहिली ना आपण माने कंसीडर करिवे large area with smaller कोन क्लाइमेटिक कंडीशन जेते बेले क्लाइमेट कंडीशन पपड़ी आसिला ना नारायण सेते बेले आपण कहिबे जेते बेले टुंड्रा एरिया आसिला डिफरेंट आपण ग्रासलैंड हैला डेजर्ट कंडीशन हैला एगुडा को आपण माने नै परिबे एज अ कोन बायोम बुझी पाइला नारायण वेरी गुड चलो गुड मॉर्निंग धना गुड मॉर्निंग सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम गोटे इकोसिस्टम दा बायोटिक कंपोनेंट हमें कोटा को कहिबा तमको भी सेम हियर so which of the following is a biotic component of an ecosystem कहा कहूचे देखो बायोटिक हेले हमें कोन कहूचे ना एयर त मैम एबायोटिक हे गला वाटर भी एबायोटिक हेला सॉइल भी एबायोटिक हेला सो एनिमल्स हमें बायोटिक कहि परिबा का को ना ओनली एनिमल्स को हमें बायोटिक कहि परिबा अरे मु तो साइड रे छिडा होछि तथापि तुम मानन को देखा जाउनी अच्छा ठीक अछि साइड हे जाउची को सो बायोटिक मींस कोन ना लिविंग एग्जांपल आपण माने डियर नै पारो लायन नै पारो जते लिविंग बीइंग्स रहि चंते लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान को आपण कोन बायोटिक नै परिबे एंड ऑल दे आर नॉन लिविंग नॉन बायोटिक क्लियर चलो नेक्स्ट मते को वेरी गुड धन सिंपल बायो मींस आपण माने लाइफ को बुझाइबे नॉन बायो मींस दे डोंट हैव लाइफ नेक्स्ट फॉर इन फूड चेन्स herbivores are also called मते कहला फूड चेन रे हमें herbivores को भी आउट कोन कहल जाय इन फूड चेन्स herbivores are called as what herbivores स्टार्टिंग रे अपन माने कर आसीबो herbivores मते को herbivores को हमें आउट कोन कहूचे प्रोड्यूसर्स तो बिल्कुल कहबानी प्रोड्यूसर्स अपन माने को एलिमिनेट कर दो जो प्रोड्यूसर कहबानी कि डिकम्पोजर कहबानी प्राइमरी कहबो या फिर सेकेंडरी को सो कोन होता है आंसर ना मैम प्राइमरी कंज्यूमर्स because herbivores that eat the producers we know them as a herbivores sorry primary consumers हमें तांको कहउचे जो माने herbivores को eat करूचंती so example अपन माने नै परिबे cow eat the grasses rabbit also eat the carrot ताको अपन माने example नै परिबे okay very good so producers को हमें कोन कहउचे ना ऑटोट्रॉफ्स लाइक हमर कोन प्रोड्यूसर्स को ऑलवेज आपण माने कहा को नेबे ना ऑटोट्रॉफ्स माने को आपण माने कोन नेबे ना मैम प्रोड्यूसर्स बोली हमें नै परिबो लाइक द प्लांट हैला algae हैला that prepare their own food those are prepare their own food they are called as the producers secondary consumers हैले सेम जदि हमें सेकेंडरी कहिबा ताहाले कोन हबो कहूची राम
yes yes okay so secondary कहले हमें का बुझुचे ना carnivores that eat the herbivores जो carnivores माने herbivore को खाती carnivores कहा ऊपर डिपेंडेंट थांती ना हर्बिवोर्स ऊपर डिपेंडेंट थांती तांको हमें कोन कहूचे ना मैम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहूचे फॉर एग्जांपल अपन नै परिबे कोन ना स्नेक ईटिंग अ रैबिट जेते बेले स्नेक कोन ना स्नेक ईटिंग अ रैबिट हमें कहि परिबा दैट इज अराउंड द सेकेंडरी कंज्यूमर डिकंपोजर हेले कोन कहबो डिकंपोजर हेले कोन कहि परिबा ना फंजी हेला बैक्टीरिया हेला ए मानको हमें डिकंपोजर नै परिबा जो माने डिग्रेड करंती जो माने डिग्रेड माने कोन ब्रेक डाउन करंती हमरा जे कोन से डेड मैटर रहिला ताकू रिसाइकिल करंती न्यूट्रिएंट को रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट और हमें कहबा ब्रेक डाउन द डेड मैटर जोटा कि डिग्रेड करिबार हेल्प करंती दे आर कोन मोस्टली हमें एग्जांपल नै परिबा फंजी एंड बैक्टीरिया कोन नेबा ना फंजी एंड बैक्टीरिया ओके चलो नेक्स्ट मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिकंपोजर को मते यस बुझा पडुची तो सब क्लियर होउची वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिकंपोजर डिकंपोजर कहतिली कोन ना मैम फंजी एंड आल्जी जते बेले ऑप्शन आसीबो जते बेले आपन को डिकंपोजर कथा पचारिबो सेते बेले फॉर श्योर आपन माने को एग्जांपल कोन थिबो ना फंजी एंड आल्जी थिबो सो आउ किछि दरकार नो मैम डिकंपोजर जनरली कोन करन ना ब्रेक डाउन करन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को माने कोन ब्रेक डाउन करिबारे हेल्प करन जेमिति कि आपन माने फॉर एग्जांपल नै परिबे मशरूम ग्रोइंग ऑन अ डिकेड वुड दैट इज एग्जांपल ऑफ द फंजी टाइगर तो हपनी टाइगर हमर कोठी पळे आसीबो ना मैम कैनिफोर पळे आसीबो क्लियर चलो नेक्स्ट चलो डियर भी हमर हर्बिवोर पळे आसीबो ग्रास हमर कोठी पळे आसीबो ना मैम प्रोड्यूसर ग्रास पळे आसीबो ये प्रोड्यूसर पळे आसीबो ओके चलो नेक्स्ट then mother को the sum of all ecosystem on earth is called sum of all the ecosystem on the earth is called what the sum of all ecosystem on earth is called what biome कहि नथिली biome हेला कोन that is the large geographical unit with distinct climate that means tundra area हेला desertic condition हेला सेटा कोन मानकु कोन कहतिली ना मैम biome सहित रिलेट करिवो सो जते बेले कोन पचारिला ना the sum of all ecosystem that is the largest unit बोली हमें कहू छै ecosystem में that is what ना मैम biosphere okay very good दरकार नै आ किछि habitat you already know habitat हमें का आगे पहुंचे मैम the place where the organisms live the place where the organisms live ताको हमें कोन कहू छै ना मैम habitat clear population already तो मैंने जानि छ गोटे ग्रुप ऑफ कोन इंडिविजुअल्स of the same species in an ecosystem or in an area में ताको population कहू next को which of the following is not a renewable source हमें consider करला काहा गोटे renewable source बोली हमें कहूने yes भाना right तो मते को renewable source good morning सस्मिता which of the following is not a renewable source काहा को गोटे renewable source बोली हमें कहिबा नाही obviously forest को हमें कहिबा ना yes renewable if conserved and replanted हेला ताको हमें consider करि सॉरी ठीक मान दोनी ताको हमें consider करि परिबा forest को renewable but it is not पचरची not हेले obviously हमें कोन को जिबा है ना forest if conserved हेला if replantation हेला then we can consider then water भी हमर को renewable होबो renewable through the water cycle though can be recycled again and again जते हमें यूज करू छे same air भी हमर renewable clear चलो next which type of pyramid is always upright in an ecosystem always समान कहितली pyramid आसिले माने सब बेले upright होबो and जते ऊपर को जीवो प्रति स्टेप रे 10% कोन एनर्जी लॉस होबो कहितले नै सो राइट आंसर मते कोन हुआ दैट इज pyramid of biomass का हबनी pyramid of number भी हबनी pyramid of all of these कोटा हबो सॉरी pyramid of biomass भी हबो pyramid of number भी तो हबो ना हां 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 राइट आंसर मते हुआ राइट आंसर कोन हबो मते हुआ हाँ मुझे जानी तो मानी को टिके कंफ्यूज करीबी एंड तमे माने समस्त ऑप्शन डी को जीवो मुझे जानी टिके कंफ्यूज करले ऑप्शन को जी को जीवो तो डी हबनी हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी जोटा कि ऑलवेज अपराइट हबो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट बिकॉज़ एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल केते परसेंट ना 10% लॉ अकॉर्डिंग 10% लॉ अकॉर्डिंग एग्जांपल आपण माने कहा नै करबे ना ग्रास रैबिट स्नेक ईगल ए फ्लोर आपण माने जिबे जते बेले
ओके ओके कंफ्यूज हो गला ओके तो pyramid number आमे कहबा that is may be upright or inverted that may be upright or inverted because upright आमे कहबा grassland case रे मैम pyramid of biomass का में consider करि परिबा as upright in condition whereas आमे inverted कोठी consider करि परिबा ना tree based ecosystem रे tree based रे हमर कोन ecosystem रे हमर inverted आसीबो so that can be may be upright or may be inverted so ये तो mix हो गला same जदी pyramid of number का में कहबा जानिला तो हो मते को pyramid of number कहले that also same and all of this बिल्कुल भी हबनी because energy is always in the pyramid चला next मते को which gas is known as a greenhouse gas या भितरु greenhouse gas कोटा कहला या भितरु greenhouse gas कोटा को जदि आपन पचारिबो which gas is essential for the respiration then go for the oxygen essential for प्रियदर्शिनी खटुआ अच्छा हो ठीक अछि किछि नै रे पिरामिड आपण माने गोटे ट्रायंगल करि देबे सेइथे डिफरेंट लेयर आपण नै जिबे फॉर एग्जांपल आपण माने केमति कंसीडर करिवे सपोज आपण माने कहिले द पिरामिड ऑफ कार एनर्जी लॉस केमिति होजी सेटा देखिबो स्टार्टिंग आपण कोन होइला ना ग्रास रहिला तापरे ग्रास को के खाउची ना मैम रैबिट खाउची देन रैबिट को के खाउची मैम ना स्नेक खाउची देन स्नेक को के खाउची मैम ना ईगल खाउची तो ए जो ट्रॉपिक लेवल ले जेते हमें ऊपर को जिबा प्रति स्टेप रे हमरा केते ना 10% एनर्जी लॉस होबो दिस इज व्हाट दिस इज अपराइट दिस इज नथिंग बट द पिरामिड ऑफ द ना एनर्जी क्लियर चलो नेक्स्ट मत देखो व्हिच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर sorry next mother ko which is the ultimate source of energy for most ecosystem ame kaha ko या पूर्वटा आंसर देली तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यस सो चलो नेक्स्ट को which is the ultimate source of energy for most ecosystem रे हमें कहूचे that is the ultimate source of energy what will be the right answer very good कोन होला सन हमें जानचे सकल शक्ति रो आधार and तांकु ही हमें कंसीडर करूचे that provides the solar energy used by the plants and हमारा जानते हैं photosynthesis process केमिति हुए ना in the presence of हमरा कोन sunlight and carbon dioxide as a byproduct oxygen हमरा कोन release हो जाए energy flow in the food chains also because of the sun clear water होले अपन important but हमें जदी energy of most ecosystem देखिबा then go for the sun okay next देखो which of the following is an abiotic factor या भितर abiotic factor हमें कहा को कंसीडर करूछे ऑलरेडी कहतिली बायोटिक हेले लिविंग को चूज करिवो and abiotic हेले नॉन लिविंग को चूज करिवो दैट मींस एठी एनिमल्स हेले कोन अछि ना मैम बायोटिक प्लांट्स असले हमें कोन कहि परिबा दिस इज आल्सो लाइक हमर कोन बायोटिक बैक्टीरिया हेले दिस इज आल्सो बायोटिक तो टेंपरेचर हमें कहि परिबा टेंपरेचर को हमें कहि परिबा कोन टेंपरेचर को ही कहि परिबा दैट इज abiotic because हमें जानि छे दैट इज नॉन लिविंग फैक्टर that influence the ecosystem जदी पचला by which element influence by which the like हमर कोन environment is being influenced then हमें कहि परिबा that is the temperature example आपण माने परिबे the desert plants adapt at the high temperature so desert condition हमर जति को plants अछंती desertic plants समस्त कोन high temperature रे भी बंचुचंती ना नहीं तो से माने abiotic condition को कोन clearly नहीं परिचंती absorb करि परिचंती next मत को the place where an organism's life is called जो भी organisms माने रहुचंती the place where an organism lives is called what ताको हमें कोन कहूचे ऑप्शंस कोन अछि देखो नीचे कहूचे habitat कहूचे biome कहूचे community कहूचे जते बेले गोटे जागा रे सब लिविंग organisms माने हमर रहुचंती हमें ताको कोन ना मैम कहिदिले आपन को ना habitat बोली कहूचे नीचे का को कहूचे अच्छा मते कहले नीचे का को हमें कहिबा ना the functional role of an organism कोन how it survives how it eat how it reproduce जते बेले हमें तार functional role ऊपर को जिबा धरी ताको हमें कोन कहि परिबा ना नीचे so this is basically about the functional role of an organisms okay so function असला माने आपण माने बुझी पारुथिबे से माने केमिति खांती से माने रिप्रोड्यूस केमिति करंती से माने सर्वाइव ताकर एवरीथिंग अबाउट द नीचे इज व्हाट ना द फंक्शन क्लियर बुझी पारिलो वेरी गुड नेक्स्ट इबा बायोमोलिटी आपण माने कहि देइथिली लार्ज इकोसिस्टम टाइम माने कोन डेजर्टिक कंडीशन टुंड्रा कंडीशन ताको एग्जांपल नै परिबे कम्युनिटी हेले कोन हबो ना ग्रुप ऑफ सेम पॉपुलेशन लिविंग इन अ टुगेदर
ताको हमें कौन कहते ना दैट इज द कम्युनिटी ओके चलो नेक्स्ट मते को व्हिच प्रोसेस रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द एटमॉस्फेयर कोन प्रोसेस रे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर को पुनी रिवर्स करि पारुचे द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर का हमें कौन कहूचे फोटोसिंथेसिस ता बिल्कुल कहिबानी बिकॉज़ फोटोसिंथेसिस रहउची तार ऑपोजिट ता कारण ना रिमूव हो जाउची कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक द ग्लूकोज राइट दैट इज द फोटोसिंथेसिस बट मते नेक्स्ट को का कहबा ना दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कौन कहउची ना मैम रेस्पिरेशन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स यस धन हमर रेस्पिरेशन यस so living organisms releases the carbon dioxide during energy production example आपण नै परिबे कोन ह्यूमन एक्सहेल करंती हमर कार्बन डाइऑक्साइड को एंड इनहेल करंती कोन ना ऑक्सीजन को example नै परिबे ट्रांसपिरेशन कोन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ता कोन मते कहलो ना वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट जेते बेले प्लांट रो हमर कोन जेते बेले प्लांट रो वाटर लॉस होउची कोन होउची ना वाटर लॉस होउची प्लांट रो in that condition हमें कौन कह परिबा ना that is transpiration clear next मते को absorption कौन कहउचे ना जते बेले प्लांट हैला या फिर लाइक सॉइल रो जते बेले absorb होची न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर that is what absorption तो any kind of water ही absorb करचे बॉडी हमर कोन absorb करची वाटर को that हमें कह परिबा that is absorption transpiration हेले जते रिलीज करियो absorption होला तार उल्टाटा clear बुझी पारुछ यस यस एरियल पार्ट रो नेक्स्ट मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोन ना मैम म्यूचुअलिज्म सो म्यूचुअलिज्म रा हमें कहा को एग्जांपल दे परिबा मते कहिला यस नेक्स्ट को मते कहा को हमें एग्जांपल नै परिबा म्यूचुअलिज्म रो व्हाट इज म्यूचुअलिज्म लायन एंड डियर ये तो प्रेडेटर एंड प्रे हे गले लायन एंड डियर तो कोन होला प्रेडेटर एंड प्रे हे गले सो बी एंड फ्लावर हमें कहि परिबा की कोन ऑप्शन सी एस नाइन लक्ष्मी प्रिया टाइगर एंड बफालो से तो दियन जाक मारा मारी हे खाकु हे जिवे से तो खाकु हे जिवे रहिला की टेपम एंड ह्यूमन तो टेपम तो पसी आइ ह्यूमन भीतर को टेपम को हम केमती कहबा टेपम तो बेनिफिट पठौछि ना तो हमें कोन कहि परिबा दैट इज द पैरासाइटिज्म टेपम एंड ह्यूमन तांको रिलेशन ता पैरासाइटिज्म हे जिवो व्हेयरएज बी एंड फ्लावर दैट इज द म्यूचुअलिज्म दैट मींस माने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भीतर तो घर को डाकुचंदी महुमाछी डाकुचंदी तू आसे मो पाखरे बस मो तो महु नै कि जा थोड़ी ना फ्लावर सेतिर अपोज करूची कि नो मैम मैम माइक टिके केमिति सीधा करिवे कि साउंड टा टिके क्लियर आसीबा मैम प्लीज साउंड क्लियर नहीं गाइस ऑडियो क्लियर नहीं कोन कहउछ देखिए ऑडियो क्लियर नहीं हेलो 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 ऑडियो क्लियर नहीं हेलो सब तो क्लियर अछि कोन प्रॉब्लम अछि रे तमन रा डिस्टर्ब करछ ओके सो को बी एंड फ्लावर हेले इन दैट कंडीशन हमें कहि परिबा दैट इज द म्यूचुअलिज्म बुझी परला म्यूचुअलिज्म में कहा कोछ जे बेले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रे किछि आदान प्रदान होउची दैट इज द म्यूचुअलिज्म एंड एग्जांपल कहार नाम लायन एंड डियर हे गेले से प्रे हो जिवो टेपम एंड ह्यूमन भी एटा हमर हे जिवो एटा पैरासाइटिज्म को पळेबो राइट टाइगर एंड बफालो ये भी प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप पळे आसी बट ओनली बी एंड फ्लावर इज satisfying the question demand next what the study of fresh water ecosystem is called fresh water ecosystem हमें कहा को कहउचे मते कुह टिके मैम क्लास सरला परे टिके बायोम विषय रे कहिबे मैम देखो बायोम हमें कहा को कंसीडर करूचे त जते बेले गोटे पर्टिकुलर रीजन हमें कंसीडर करूचे एंड सेही कंडीशन जहा को हमें रिसर्च करूचे सपोज तुंद्रा को हमें नहीं गले तुंद्रा एटा मींस कोन हमर बरफ एरिया पळे आसिला राइट हमें डेजर्टिक कंडीशन को पळे आसिले दैट मींस पूरा बहुत सारा गरम एरिया को पळे आसिले हमर कोन आसुची मैम दिस इज द डेसिडियस मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हमर पळे आसुची सो हमें ट्रॉपिकल रीजन को पळे आसिले सो ट्रॉपिकल हैला हमर तुंद्रा हैला या फिर डेजर्टिक कंडीशन हैला ए सबुतिक कंडीशन माने क्लाइमेटिक कंडीशन को नेकी जते हमें रिसर्च करूचे क्लाइमेटिक कंडीशन ऊपर हमें क्वेश्चन आसुची दैट इज द बायोम कोन बायोम मन रहिबो बायोम रे लास्ट को अछि ई अछि बी आई ओ एन ई सो ई फॉर द एनवायरनमेंट क्लियर नारायण और लास्ट का जदी सॉरी नारायण बचाले ना राम बचाले अच्छा ठीक अछि नेक्स्ट मते को द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज कॉल्ड
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आमे कहा को कहूचे दैट इज लिम्नोलॉजी लिम्नोलॉजी कौन मते देख कहलो लिम्नोलॉजी ही हमर रहउची स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर सिस्टम्स लाइक कोन लेक्स हैला फॉन्स हैला रिवर्स हैला ए सब का एग्जांपल ले परिबे जहां पर हमें रिसर्च करूचे कोन ना algal bloom ऊपर सपोज algae रो ग्रोथ केमिति होउची गोटे लेक्स रे आपण मान देखिथिबे ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर सब रहउची सो जो algal growth हमर केमिति रहउची ता पर हमें रिसर्च करूचे दिस इज द लिम्नोलॉजी clear this is what now this is ma'am limnology so oceanography कोन हेबो ना the study of ocean oceanography असले माने आपण माने इजीली कहि परिबे कोन ना मैम स्टडी ऑफ ओशन हेले हम oceanography कहउची राइट climatology हेले स्टडी ऑफ क्लाइमेट and the weather forecast weather pattern the total pattern को हेला क्लाइमेट को हम बुझुचे then मते को जियोलॉजी that is already concept study of earth हेले geo means आपण माने एटा जियोलॉजी लेखा हेनी या फिर कोन अपन माने जियोग्राफी पढले कोन होछ ना स्टडी ऑफ अर्थ हेतरा में जियोग्राफी पढुछ ना नै तो जियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ अर्थ एंड अबाउट द रॉक एंड द लैंडफॉर्म्स सो अपन माने कहि परिबे अर्थ रो दिस इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड अर्थ रा में कोन कहउछे ना रॉक होची तार केमिति लैंडफॉर्म्स होची एंड आमे देखुछे जो कोन टेक्टोनिक मूवमेंट सब होची कोको प्लेट को हमर कोन केमिति नुआ नुआ कंटिनेंट स्प्रेड होउची ए सब ऊपर हमें रिलेट करि परिबा अरे इट्स ओके किरण डोंट वरी तो ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय मते कहला ओजोन डिप्लीशन कोथि पय हुए लक्ष्मी प्रिया लिम्नोलॉजी को हमें कहूचे दैट इज द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर सिस्टम फ्रेश वाटर कोठी मिलिबो फ्रेश वाटर हमको ओशन रे मिलिबोनी फ्रेश वाटर हमको सी रे मिलिबोनी फ्रेश वाटर कोठी मिलिबो ना पॉन्ड रे मिलिबो लेक्स रे मिलिबो रिवर रे मिलिबो सो एग्जांपल हमें नै परिबा द रिसर्च ऑफ algae growth in the lakes तो ए जे हमर कोन रहिला लिम्नोलॉजी सेथि हमें कोन रिसर्च करूचे ना लिम्नोलॉजी रे मैम हमें रिसर्च करूचे जो algal bloom माने आसुसंती आपण माने देखुथुए सिउली ऊपर जोटा भासी के रहउची ता ऊपर हमें रिसर्च करूचे लिम्नोलॉजी रे एंड से सिउलीटा कोठी आसे केते बेले आपनकर ओशनिक कंडीशन रे आसीबनी सॉल्ट वाटर रे केते बेले भी हबनी सेटा फ्रेश वाटर ही हबो सो फ्रेश वाटर हमें रिसर्च करछु जते बेले अबाउट कोन ना algal bloom ताकू हमें कहि परिबा दैट इज द लिम्नोलॉजी बुझी परिला तो ना कौन हिला भूली गली तो पिलांग भितरे सस्मिता राइट सॉरी लक्ष्मी प्रिया बुझी है ना ओके तो एबे आंसर दिया ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय ओजोन डिप्लीशन हमें मेनली कहा पई कहूचे दैट इज कौन हबो मते कुह ओजोन डिप्लीशन जते बेले आसुची हमें कहा को कहूचे ऑब्वियसली मैम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही रिस्पांसिबल लेबा काको ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमें रिस्पांसिबल करिबा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कोन होची ना ब्रेक करूची द ओजोन को तो ओजोन मॉलिक्यूल का हमें कंसीडर करछे कोन ना मैम O3 इज व्हाट ना ओजोन मॉलिक्यूल्स को से कोन ना स्ट्रेटोस्फियर लेयर है कोन लेयर यदि लेयर कथा पचलला ना ताले आपण माने कहबे ओजोन लेयर कोठी अछि ना मैम स्ट्रेटोस्फियर रे अछि तो टोटल केतेटा लेयर को हमें कंसीडर करूचे ना मैम टोटल लेयर 5टा को हमें कंसीडर करछे सेतिर स्ट्रेटोस्फियर हमर कोन ना ओजोन लेयर रहउची एंड दैट कोन ना ब्रेक डाउन करूची मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स को ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एग्जांपल अपन नै परिबे तो ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड द एरोसोल्स तो ओल्ड रेफ्रिजरेंट्स माने कोन करिवे ना एरोजल हे जिवे धीरे धीरे अपन माने जते पुराना हेबे ताकर जोटा हमर कोन थिबो गैस चैम्बर जोटा थिबो धीरे धीरे देखिबो से माने कोन एरोजल हेबारे स्टार्ट करिवे माने कलंकी लागिबो तापर धीरे धीरे ओल्ड होला पर पूरा सेमिति जेमिति स्टार्टिंग रे जो कंडीशन रे पूरा नुवा चकचक करूथो से जो चैम्बरटा सेमिति नथिबो ता भीतर लेयरटा गोटे पुराना रेफ्रिजरेटर नै कि देखिबो जोटा हमर गैस फिल अप हुए से गैस चैम्बर को फटै कि देखिबो ता भीतरटा पूरा जंग खाइ कि लागि रहिथिबो सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमर कोन करे ना स्टार्ट करे डिप्लीट करिबा जे कोनोसी लेयर जदि सेही भले कंटेनर को भी डिप्लीट करि पारुची देन ओजोन लेयर कोन दिस इज जस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर राइट चल नेक्स्ट मते कुआ जदि अपन माने को एसिड रेन पचारिला जदि एसिड रेन पचारिला ताहाले गो इज द ऑप्शन एसिड रेन रे SO2 सल्फ्यूरिक एसिड मान को अपन नै हैला दिस इज कॉल्ड जस्ट द एसिड रेन ओके वेरी गुड चल नेक्स्ट मते कुआ in ecological succession the final stable community is called ecological succession ने मैम साउंड लो पुनी हाई होची मैम गाइस साउंड क्वालिटी कोन अछि मते कुहटे साउंड ठीक अछि तो या फिर चार्ज नहीं गोटे हो मु एटा चेंज करके आ गोटे मिनिट जस्ट अ मिनिट दियो
कहला मते क्लियर आसुची ना नहीं गाइस एबे क्लियर आसुची तो कहला क्लियर अछि एटी वे रे आउ जते ऊपर को रहले भी कोन हबो चिल्ले चिल्ले स्पीकर फाटिला हले लागिवो काई एंती होउछ ओके चलो एबे ऊपर को लगे देली को मते को इन इकोलॉजिकल पेन कोड छाडली एबे को इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी अच्छा इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपण मन को वैरायटीज ऑफ कम्युनिटी विषय रे कहिची सो मते को इकोलॉजिकल सक्सेशन रे फाइनल स्टेबल कम्युनिटी कोन सब बेले मन रखिथिबो क्लाइमैक्स वर्ड आगुरु भी कहिथिली एबे भी कहूची क्लाइमैक्स वर्ड जते आसीबो हम मूवी रे क्लाइमैक्स से रिलेट करूछु कि क्लाइमैक्स माने कोन अरे रुह रुह क्लाइमैक्स तो बाकी अछि दैट मींस मेन सीन बाकी अछि माने लास्ट माने कहि परिबा द सीन हमर कोन ए पर्यंत बाकी अछि सो क्लाइमैक्स को रिलेट करी हम कोन दैट इज स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी फॉर्म and कहि परिबा आफ्टर द कम्युनिटी आफ्टर द सक्सेशन इज कंप्लीट होला पर अपन माने मैच्योर फॉरेस्ट को एग्जांपल ले परिबा का गोटे मैच्योर फॉरेस्ट को छोटे छोटे गछ नथिबो पूरा गोटे कोन अपन माने कोरापुट रीजन फुलबाणी रीजन देखिथिबो साला बन में अपन माने छोटे छोटे गछ पाइबन एका थरे समस्त गोटे रीजन में बड़ बड़ गछ सब थिबे हैना मैम एसएसबी टीजीटी आर्ट्स क्लास आपरे शो करूनी कॉल तो रिस्पोंड भी करू ना है कोन अछि एबे सॉल्व करूची रो ऑलरेडी तो का क्लास तमरो चाली छी केडी सर ऑलरेडी क्लास चाली छी सो तापर मते नेक्स्ट को राइट कोन हबो ना क्लाइमैक्स कम्युनिटी हबो पायोनियर कम्युनिटी हमें का कहचे ना पायोनियर कम्युनिटी में फास्ट जदि आपण पछारिबा ना इनिशियल कंडीशन एठी कोन पछाला ना फाइनल स्टेबल कम्युनिटी जदि आपण कोठी फास्ट कम्युनिटी पछारथांदा इनिशियल पछारिथांदा ताहाले आपण कोन कहथांदे ना ऑर्गेनिजम्स to colonize a bare area example आपण माने परिबे lichens on the bare rock रे स्टार्टिंग रे हमर कोन lichens आसे तापर हम रिलेट करूछु कोन अदर स्टेप सो सेते बेले फर्स्ट स्टेप कथा पछारिला जदि आपण माने को फर्स्ट स्टेप कथा पछारिला ताहाले आपण माने रिलेट करबे का गुना पायोनियर इज द फर्स्ट whereas climate is the last एति की देटा मन रख परिबे इंटरमीडिएट त हमर कोन ना ट्रांजिशनल स्टेज दैट मींस ड्यूरिंग द सक्सेशन हमर कोन जते बेले गोटे स्टेज रु जते इको जोन कहथिली कोन गोटे इकोसिस्टम रु आ गोटे इकोसिस्टम को ट्रांसफर होबो सेते बेले हमें कहि परिबे गोटे इकोटिक जोन रु आ गोटे जोन को जते बेले हमें कोन ट्रांसफर करूची लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें ताको कोन कहचे ना इकोटोन सो इकोटोन ता को कंडीशन जिवो ना मैं जिवो इंटरमीडिएट कम्युनिटी रे दैट मींस द ट्रांजिशनल फेज को हमें कंसीडर करबा बुझी पारिला सक्सेसर हेले दैट इज द कोन ना जस्ट अ जनरल टर्म दैट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द इकोलॉजी ताको रिलेट करनी हैला सो एते के बुझी पाइला क्लाइमेक्स हेले सब बेले लास्ट को रिलेट करबा पायोनियर हेले फर्स्ट को रिलेट करबा इंटरमीडिएट हेले कोन ना मीडियम को रिलेट करबा द कोन एक्सचेंज जोन और द ट्रांजिशनल स्टेज को रिलेट करबा बुझिस तो अरे मु भी कॉल करथिली उठो नांदी के व्यस्त थिबे हैना सौम्य मु भी कॉल करथिली डेविल्स क्वीन लास्ट को वेट करो ऑफिस हेल्पलाइन नंबर भी आसी जिवो तो मते यार क्वेश्चन आंसर देला व्हिच साइकिल इन्वॉल्व्स अरे सिक्की हीरा लालस नांदी टिके कहिलो से पिला के कॉल करूचंदी रिसीव करबा लागि ओके सो को व्हिच साइकिल सौम्य तमे तो एबे कहिलो नंबर को कॉल करूथलो उठो नांती अरे बाबा लाइक से आसी नथिले ऑफिस एबे ऑफिस आसुचंती तो आसिले तम सहित कथा हेबे ना काई व्यस्त होउचो सो को व्हिच साइकिल इन्वॉल्व्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन मते को नाइट्रोजन फिक्सेशन सेटा में कहा को ना नाइट्रोजन को रिलेट करिबा इंक्लूड्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट converts the atmospheric nitrogen into usable forms like हमर कोन ना ammonia so nitrogen को ammonia रे कन्वर्ट करे किए ना नाइट्रोजन साइकिल जदि हम फास्फोरस साइकिल कहिबा फास्फोरस साइकिल हेलो हां से हिरालाल टिके देखिलो के कॉल करूछन पिलांग सहित कंसीडर कलो हां ओके सो मते को व्हिच साइकिल इन्वॉल्व्स ना मैम दिस इज नाइट्रोजन साइकिल ओके
सो phosphorus cycle है हमें कौन कहूचे ना मैम द मूवमेंट ऑफ phosphorus in soil जेते बेले soil को phosphorus मूवमेंट करूची ताको हमें कहूचे phosphorus cycle this is the movement of phosphorus into ना मैम soil ताको हमें कौन कहूचे ना phosphorus cycle एतिकी बुझा पड़िबा वाटर साइकिल आपण माने जानि सन दैट इन्वॉल्व द इवापोरेशन कंडेंसेशन precipitation ए वर्ड गुडा जते बेले आपण माने क्लास जिबा ताको हमें कंसीडर करिबा वाटर साइकिल नॉट द नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लियर जते आपण को कार्बन साइकिल पछला दाल obviously deals with the carbon dioxide like the exchange between the atmosphere and the plants or atmosphere with the animals ताको हमें कोन कहउछन आमी जोडे इनहेल करूछे एक्सहेल करूछे the procedure is under the carbon cycle but nitrogen cycle ले कोन बना नाइट्रोजन को अमोनिया रे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करिबा कोथरे ना मैम अमोनिया रे कन्वर्ट करिबा ताको हमें कोन कहउछन ना नाइट्रोजन साइकिल फॉस्फोरस ले हमर सॉइल भीतर फॉस्फोरस एंट्री करूची हमें ताको कोन कहते ना मैम फॉस्फोरस साइकिल एतिकी जिंस बुझी परिला एतिकी जिंस काचो क्लियर आगु को जिबा और हैविंग एनी डाउट नेक्स्ट मते को व्हिच टाइप ऑफ स्पीशीज इंडिकेट द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम ऊपर हमें को स्पीशीज को रिलेट करि परिबा मते कहिलो which type of species indicate the health of an ecosystem one ecosystem रा health ऊपर हमें कहा को indicate करी की कहूचे that is related with what ना endemic species तो होबनी काहे endemic species होबनी मैम हमें जानि जे endemic species that found only in a particular geographical area example अपन मने नै परिबे निकोबार आइलैंड ता निकोबार हेला अंडमान हेला ए आइलैंड माने पर हमें देखुचे that is indicating in the particular ecosystem that is the endemic species okay ताको हमें नै परिबानी कारण ecosystem तार हेल्थ ऊपर जण कहू obviously that is the indicator species हेतिबो कोन जेते बेला अपन माने पछरिला indicate the health that means indicator species who indicate that is the indicator की अपन को indicate करे ना indicator ही करे so the species whose presence B और C भीतर कहूची इंडिकेटर ता बुझी सारा तापर अपन मन को एक्सोटिक भी कहिबी सो इंडिकेटर स्पीशीज हमें कहा को कहउची ठीक भलो से सुनो ना तो स्पीशीज व्हिच प्रेजेंस और एब्सेंस और द अबंडेंस रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंडीशंस दैट मींस जदी प्रेजेंस रहिला पोल्यूशन होउची जदी एब्सेंस रहिला सैलिनिटी आसी जाउची या फिर जदी एब्सेंस रहिला ऑक्सीजन डिमांड होई जाउची ऑक्सीजन कमी होउची सैलिनिटी रो कमी होउची सैलिनिटी रो कोन salinity in the ocean salinity in the soil ये सब डिक्रीज होची इंक्रीज होची ताको हमें कोन कोन करिबा ना इंडिकेटर जे कि हमर कोन कंडीशन को देखौची से प्रेजेंस अछि नथि हमें कहउचे हमर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होई जाउची दैट्स व्हाई हमर कोन हमर एयर पोल्यूशन होची सो तार प्रेजेंस रे हमें कहि परिबा पोल्यूशन सैलिनिटी ये सब जिंस होची ताको हमें कहबा इंडिकेटर स्पेसिस जे कि इंडिकेट करिवो कि से प्रेजेंट अछि और एब्सेंट अछि एग्जांपल माने आपण माने कोन लाइकेंस को नै परिबा दैट इज द लिविंग एग्जांपल्स लाइकेंस इंडिकेटिंग द क्लीन एयर जदी लाइकेंस हमर प्रेजेंट अछि एनवायरनमेंट रे हमें कहउचे दैट इज हम पाखरे कोन सब द एयर पास करछि दैट इज क्लीन एयर हमें जो इनहेल करछि ऑक्सीजन दैट इज द क्लीन ऑक्सीजन क्लियर नेक्स्ट मतलब देखो एक्सोटिक स्पीशीज कोन कहउची ना मैम दैट इज द नॉन नेटिव स्पीशीज माने कोन कहउचे ना जोरा इंट्रोड्यूस हे परिबे लाइक ऑप्शन हमें कहि परिबा दैट इज इनवेसिबल तो बहुत ही रेयर स्पीशीज को हमें कहि परिबा एग्जांपल आपण माने नै परिबे कौन एग्जांपल ले हबन इंडियन हाइसिंथ द इंडियन हाइसिंथ गोटे हमर आसे हां ब्लू ग्रीन एल्जी को अपन माने भी नै परिबे ब्लू ग्रीन एल्जी को भी एक्सोटिक रे नै परिबे वेरी गुड दैट इज एटा कि ओनली हमर जोटा कहउतली कोन कहलो that is the hyacinth होची water hyacinth जोटा कि हमर ओनली इंडियन वेटलैंड्स रे मिले अदर कोई कंट्री रे हमर मिले नाही जोटा कि बहुत ही रेयर हे थाय गोटे जिंस मन रखो एक्सोटिक that is very rare and rarest हमें कहि परिबा that is the invasive कहि परिबा that is the exotic and the rare species is different जोटा कि naturally occur होइता है in the low numbers रे naturally occur होइता है जोटा को हमें rare species कहउचे but exotic ता को only अपन invasive कहि परिबो जोटा कि rare data book रे मेंशन अछि invasive species है exotic आसीबो rare है that is जोटा कि हमर naturally low numbers रे आसीथांती ओके एति कि बुझी पाइलो और किछि डाउट अछि क्लियर तो चलो नेक्स्ट मतलब क्या the gradual change in species composition of an area is called अच्छा the gradual change in the species composition ताको हम कोन कहउचे ना the gradual change in the species composition of an area is called what ना मैम सक्सेशन कोन कहउचे ना मैम आपको हमें सक्सेशन बोली कहउचे ओके यस खुशबू सो सक्सेशन कहा को कहउचे ना that is the directional sequential
change in the community structure over the time. Suppose आपण माने कहली pioneer टा आपण माने consider करथले कोन pioneer को आपण कोन करथले ना मैम starting phase हमें pioneer को करथले तापर आस्तले कोन ना intermediate तापर कोन आस्तले ना climax ए जो starting जो structure टा हमर रहिछि तो structure रहिछि कोन pioneer रो intermediate रो climax पर्यंत ए जो structure टा हेछि that is the succession. Clear? The intermediate hela pioneer hela intermediate hela climax hela example आपण माने करछन कोन ना pond gradually infill होउची to the become the mass धीरे धीरे pond भीतर आपण माने देखुथुबे मार्स रो मिडो को जाउची तापर वुडलैंड रे फॉर्म होउची तो धीरे धीरे pond इकोसिस्टम रो आपण माने केमिति ता पाखा पाखी गछ बढुसंदी गछ छोटो छोटो गछ रो बड़ गछ सो धीरे धीरे आपण माने जानथिबे pond भी हमर कोन पोती हे जाउची गछ बढ़ी बढ़ी की तो हमें रिलेट करि परिबा की रिलेट करी परिबा का सहित ना सक्सेशन सहित इवोल्यूशन हेले आपण माने को कोन कहबो इवोल्यूशन हेले कोन कहउची को मते इवोल्यूशन इज नथिंग बट द लॉन्ग टर्म चेंज इन द हेरिटेबल traits of population जते बेले हमें देखुचे सिंपाजी रो मनुष्य मानकर उत्पत्ति हेछि केमिति हेछि ना इवोल्यूशनरी चेंज हेछि दैट मींस हमर एंसेस्टर सिंपाजी थिले धीरे धीरे से माने आपण माने जानिथिबे आदिम मनुष्य केमिति मनुष्य को कन्वर्ट होला से माने खाइबा पिबा जान नथिले धीरे धीरे चेंज होला दैट इज व्हाट ना इवोल्यूशन दैट इज द लॉन्ग टर्म चेंज इन द हेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन along or across the generations हमें कहउचे दैट इज इवोल्यूशन एक्सटिंक्शन कहले कोन बुझिजो Yes, so मतलब extinction कौन कौन सा ना देते बेले complete disappearance है जो ऑफ species देते बेले गोटे species invasive हुए invasive रू completely disappear हो जाए then in that condition हमें ताके कहूँ कौन ना that is the extinction so that means completely disappear that is extinction clear बुझी पारला very good that is विलुप्त प्राय हो जाए okay चलो next मत तुम Which organisms are called autotrophs? Autotrophs हमें कहा को कहबा मते टिके कहिलो Which organisms are called autotrophs? Autotrophs हमें कहा को कहूचे They are autotrophs that they synthesize the organic food from the inorganic sources. They synthesize their food like organic food from the inorganic sources. हमें usually कौन कहि परिबा by the photosynthesis process. So हमें कहा को नहीं परिबा ना मैम producers. का प्रोड्यूसर्स को नहीं परिबा फाइटोप्लैंक्टन हेला हमर सियानोबैक्टीरिया हेला एग्जांपल हमें ताम नहीं परिबा ग्रीन प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन सियानोबैक्टीरिया एडा को हमें प्रोड्यूसर्स रो एग्जांपल नहीं परिबा कार्निवोर्स कोन ना दे आर अंडर द सेकेंडरी हेला टर्शियरी कंज्यूमर्स हेला ताको हमें कहि परिबा दे आर द कार्निवोर्स जो माने कि एनिमल्स माने को खादी दे ईट द एनिमल्स एग्जांपल अपन माने को नहीं परिबे ना टाइगर को नहीं परिबे स्नेक को नहीं परिबे डिकंपोजर हेला हमें का को कहउचे ना डिकंपोजर इज मैम जो माने ब्रेक डाउन करंती डेड ऑर्गेनिक मैटर को फंजी या फिर बैक्टीरिया को अपन माने एग्जांपल ले परिबे क्लियर चलो नेक्स्ट मते को freeze cycle involves transpiration and precipitation नेक्स्ट मते को एबे ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक फूड रो कोन त माने कहबी अरे बहुत ही कम आपण माने कहबे सारा यूज होउनी एग्जांपल आपण माने मागचंदी माइंड को तो आसुनी बट स्टिल कहबी वेट so freeze cycle involves transpiration and precipitation transpiration and precipitation nitrogen cycle already कहउची कार्बन cycle भी कहउची even sulfur cycle भी कहउची हमर कोन जब soil ले sulfur add होउची so रहिला कि obviously मैम water cycle कि रहिला ना मैम includes the evaporation transpiration and कोन ना मैम condensation so condensation precipitation runoff हबा हमर कोतरे ना water cycle next को desert ecosystem is an example of अच्छा desert ecosystem कहिथिली डेजर्ट इकोसिस्टम आसिला तुंद्रा इकोसिस्टम आसिला एटा आपण माने कोथरे एग्जांपल लेबे बट स्टिल एटा गोटे डिफरेंट टाइप रो इकोसिस्टम पचारछु मते को एक्वास्टिक रे तो हबनी कारण हाइड्रेट कंडीशन रे एक्वा मींस कोन वाटर सहित हाइड्रेट कंडीशन हबो सो ये तो हबनी देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आसीबो की मते को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कोन हबो यस मैम दिस इज द लैंड बेस्ड इकोसिस्टम लाइक डेजर्ट हैला फॉरेस्ट हैला ग्रासलैंड हैला तुंद्रा हैला एक्वा में कोन ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोली कहू जेटा को बायोम रे हमें रिसर्च करूछे ओके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हेले कोन हबो तले एटा को आर्टिफिशियली जेटा मैन मेड हबो दैट इज एग्रीकल्चरल फील्ड होला एक्वेरियम्स होला एटा को अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में नहीं परिबे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हबो कोन ना दिस इज अ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बट द क्वेश्चन हमको कौन पचारिछि ना डेजर्ट इकोसिस्टम
ये हमरा ता अंडर जीव भारी किंतु स्पेसिफिक जो डेजर्ट इकोसिस्टम पचारला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ता अंडर पड़े ओके ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी हबो ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी कोन जन्मे जाय हबो बट स्टिल आपन को डेजर्ट इकोसिस्टम पचारि छि जदी को कंडीशन है जेमिति कि टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हमर कोन डेजर्ट इकोसिस्टम जीवो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जीवो बुझो म कथा ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम टुंड्रा कंडीशन जीवो एरा सब कोन ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अंडर जीवो बट डेजर्ट इकोसिस्टम पचारि छि कहा अंडर that is the example of a terrestrial ecosystem में जो एग्जांपल पचारला पुनी कोन ना पुनी कोन परिबा ग्रासलैंड इकोसिस्टम तार पुनी गोटे एग्जांपल बट क्वेश्चन ता टिके बुझिबा ट्रिकी पचारि दिए somehow ओके चलो नेक्स्ट मत को which one is the primary producer in an aquatic ecosystem प्राइमरी कंडीशन हम कोन कहबा रेड डाटा बुक कोन रेड डाटा बुक हो सेटा जितरे इनवासिव स्पीसीज धीरे धीरे जोटा विलुप्त हे जाउसन जो स्पीसीज सेटा को मेंशन करके रखा जाउछ कारण आमे एबे पढुचे ए स्पीसीज ता हम आखिरे अछि आउ 50 वर्ष आउ 100 वर्ष गला पर रेड डाटा बुक जदी नथिबा हम जानि परिबानी कोन स्पीसीज हमर थिबा जेमि डायनासोर हैला आहुरी कोन डिफरेंट एनिमल स्पीसीज हैला जदी रेड डाटा बुक में मेंशन नथांदा देन हमें जानि थांदा केमिति सेटा को मेंशन करके रखिया पई रेड डाटा बुक हमर कोन ना मेंटेन कर जाउछ हैला चलो नेक्स्ट मत को नेक्स्ट टिके को which one is the primary producer in an aquatic ecosystem सहित प्राइमरी प्रोड्यूसर कोटा कहबा फिश तो हबनी फिश तो हमर कोथरे पड़ेबो ना ना ये तो कंज्यूमर रे पड़ेबो एको तो हमें खाई दोचे सो कोन ना फाइटोप्लैंक्टन सो माइक्रोस्कोपिक algae and the cyanobacteria is a type of phytoplankton they perform the photosynthesis and form the base of aquatic food chain okay so यार एग्जांपल अपन माने बेस्ट नै परिबे कोन रे जू प्लैंक्टन हबनी क्वेश्चन आसीबो मैम जू प्लैंक्टन कोन हबनी बिकॉज़ दिस इज वेरी टाइनी एनिमल्स ओके सो टाइनी एनिमल्स आर माने जू प्लैंक्टन को दे आर फीड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन सो माने कहा पर बंचनी ना ए फाइटोप्लैंक्टन को खाइ के माने बंचनी सो स्टार्टिंग जदी प्रोड्यूसर हबो कोन ना फाइटोप्लैंक्टन एको खाइ जू प्लैंक्टन माने बंचनी सो ये तो हमर प्रोड्यूसर केबे आसीबो नाही ये हमर प्राइमरी कंज्यूमर रे आसीबो प्राइमरी प्रोड्यूसर को जे खाउची ताको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहबा आपन माने जू प्लैंक्टन को प्राइमरी कंज्यूमर भाबरे नै परिबे ओके क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट में देखो which one is a man made ecosystem कहा को कहछन मत कहलो man made ecosystem that is artificial ecosystem so obviously कहितली एग्रीकल्चरल फील्ड हैला एक्वेरियम हैला एक्वा आपण माने कोन रे ना मैन पॉन्ड आसिलानी पॉन्ड तो यूजुअली नेचुरल है ना पॉन्ड यूजुअली नेचुरल जदि एठी एग्रीकल्चरल फील्ड नाही ताहाले आपण माने पॉन्ड आडको जाती एग्रीकल्चरल फील्ड एक्वेरियम जदि ऑप्शन अछि ताहाले पॉन्ड को माइंड रो काट देबे हैला चल पॉन्ड ता जनरली नेचुरल आसे बट एबे हमें हमर फार्मिंग कंडीशन ए सब को आखे में रखी कि तार ग्रोथ डेवलपमेंट पे हमें पॉन्ड को कोन माने पोखरी धीरे धीरे खोलुचे बट नेचुरली हमर पॉन्ड ता को ना नेचुरल इकोसिस्टम रे जीवा हैला जदि नेचुरली हमर कोन सॉरी आर्टिफिशियल हमर एग्रीकल्चरल लैंड नाही देन पॉन्ड अछि ताल जीवा दैट इज वेरी रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस जोटा कि हमर हबो भी नाही नेक्स्ट मते को which of the following is an example of secondary succession अच्छा मते कहिला फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन रे एग्जांपल कोन हबो जू प्लैंक्टन्स कोन जो माने टाइनी एनिमल्स माने रहउसंती जू प्लैंक्टन्स जो माने कि फाइटोप्लैंक्टन को खाइ कि बंचुसंती एंड फाइटोप्लैंक्टन कोन जो algae गुडा रहउसंती पोखरी रे हमर पोखरी या फिर एक्वाटिक कंडीशन रे जो algal bloom माने कोन तांकर धीरे धीरे रिट्राइव होउसंती धीरे धीरे कोन से माने स्प्रेड होउसंती से माने को खाइ कि फाइटोप्लैंक्टन्स माने बंचुसंती सॉरी फाइटोप्लैंक्टन्स माने को खाइ कि जू प्लैंक्टन्स माने बंचुसंती तार कोन एग्जांपल देबी आपण माने स्नेल को भी नै परियो फॉर एग्जांपल ओके जू प्लैंक्टन जते छोटे छोटे एनिमल्स अछते तार एग्जांपल आपण माने नै परिबे ठीक अछि प्रियदर्शिनी और किछ डाउट अछि मते पछियो तो मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन आउट द क्लास अछि मोर संगे संगे ठीक जल्दी सर तम गाडी रे अछि हां हां थिबो निहाती सो राइट आंसर हमें कोन कहू छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन मैन अबैंडन्ड फार्मलैंड और टू ग्रासलैंड abandoned farmland to grassland हमें कहता है that is the secondary succession why because soil already present था जो भी soil हमर absent था जल्दी कि starting हमर कहतो हो ना lichens माने normal हमर कोन bare rock रू start करते that is the primary secondary माने कोन हमर जोतरे soil agru present अछि जोतरे vegetation हम जदी करबा that is regrow होई परिबा the vegetation can regrow ताको हमें secondary नउचे bare rock to forest this is the primary one bare rock to forest हेले ताको हमें primary succession कहबा जोतरे कि soil initially नथिबो पत्थर रू स्टार्ट होइथिबो ओके
Yes or not? So volcanic lava to most amar kon habo, this is also primary succession habo because starting from the bare surface setebele hoy jiba taku apana mane kon nei paribe na, that is the primary succession. Rest setebele amar soil present achi, in that condition apana mane nei paribe kon na secondary. Chalo next. So which layer of atmosphere contains ozone? Ozone already अपन माने को कहि दिली, ozone सहित कोन ना मैम stratosphere को रिलेट करिवो कोन, ozone सहित हम कहा को ना stratosphere को रिलेट करछ, जोतिर हम कोन UV radiation को प्रोटेक्ट करूछ हम कोन डायरेक्ट स्क्रीन ऊपर पड़िबा. क्लियर, वेरी गुड. दैट इज ओजोन होल को भी हमर कोन अंटार्कटिका रीजन में ओजोन होल अछि, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ना हमर यूवी रेज आसी ताकि होल कर देछि, दैट इज रिलेटेड अंटार्कटिका रीजन ता सहित भी रिलेट करके मन रखियो. नेक्स्ट मते को व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ द इन सिटू कंजर्वेशन. अच्छा, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन कोन जानिछो? इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन कोन जानिछो? जते बेले इन सिटू हमें कहूछे, सपोज अपन मन फर्स्ट कहूछे एक्स सिटू, जोटा कि जू हबो कोन ना जू मैम गोटे एक्स सिटू कंजर्वेशन. ओके, सो काहे की बिकॉज़ हमर जानछ आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, जते बेले हैबिटेट माने नेचुरल सॉरी जते हैबिटेट माने नेचुरल लाइक आउटसाइड गोटे पर्टिकुलर जोन भीतर न थाई कि चारि आडे बुल्ली कि समान तांगर हैबिटेट कलेक्ट करि पारंती. आउटसाइड हे गेले मन रखता, जते आउटसाइड कथा पचरला एक्स रिलेट करिवो, जते बेले इनसाइड कथा पचरिला इन पचरिवो, दैट मींस भीतर कथा पचरले इन पचरिवो. बोटानिकल गार्डन हेले कोन हबो? बोटानिकल गार्डन भी मैम हमर एक सितुरे पड़ेबो, ये भी हमर एक सितुरे पड़ेबो. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमर कोन हबो ना इन सितु कंजर्वेशन. काहेकि कारण ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज माने को गोटे नेचुरल हैबिटेट भीतर रखे, गोटे नेचुरल हैबिटेट भीतर प्रोटेक्टेड स्पीशीज माने को रखे. आपण माने एग्जांपल ले परिबे सिमिलपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सिमिलपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमर कोथि जिवो ना मैम ये जिवो हमर इन सितु रे. ओके, सीड बैंक कोन ना मैम सीड बैंक एक सितु हे जिवो कारण स्टोरेज ऑफ सीड्स कोन बाहर एरिया रे भी बाहर हैबिटेट रे हेतर गोटे जगह रे तो हबनी ना, बाहर हैबिटेट रे भी हे परिबो. ओके, सो अगेन आपण माने पचारछले हेल्पलाइन नंबर, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर. किछि क्वेरीज अछि रिगार्डिंग परचेज कला टाइम रे आपण माने हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट करी कि क्लियर करी पारिबे है ना. वेरी गुड. चलो, तो 26 ऑलरेडी कवर हो सारलानी, 27 भी हमारा सरलानी, 28 गोटे दिन अछि आज बैच परचेज करनियो. चलो, thank you so much guys, have a good day, take care of yourself, but first of all take care of parents first. Thank you guys, thank you so much, and class को आउथर 2x speed टिके रिवीजन करि दो for your betterment. I am saying this. Okay, चलो, thank you.